Standard 8, Subject Sanskrit, Chapter 8, Manushya Sinhayo Maitri. A true story that happened in Saurashtra has been presented in this chapter. तो आज हम ये चैप्टर सीखेंगे. सौराष्ट्र प्रदेशे सताधार ग्रामस्य समीपे मोटी मोणपरी नामकः ग्रामः वर्तते. सताधार ग्रामस्य समीपे मतलब नियर सताधार विलेज. मोटी मोणपरी गांव, विलेज नेम क्या है? मोटी मोणपरी. वर्तते, वर्तते यानी कि इज, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ वर्तते. कतिपय वर्ष पूर्वम, कतिपय वर्ष पूर्वम यानी अ फ्यू इयर्स एगो. तस्मिन ग्रामे, इन दैट विलेज. मात्रावाला नामः यानी कि बाय द नेम ऑफ मात्रावाला. कृषिवलः असितः, कृषिवलः फार्मर. नद्या तटे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. मात्रावाला कृषिवाटिका अस्ति. मात्रावाला कृषिवाटिका यानी कि मात्रावालास फार्म. मात्रावाला प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि डेली. वाटिकाया, वाटिका यानी कि यहाँ पे कृषि वाटिका का उल्लेख है, तो मात्रावाला का जो फार्म है उसका उल्लेख किया हुआ है. इन द फार्म. वृक्ष तले, अंडर अ ट्री. स्थित्वा यानी कि सिटिंग. नद्या यानी रिवर. जलम यानी वाटर ऑफ द रिवर. अपश्यत यानी कि लुक्ड एट. तो इसका हम पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे इंग्लिश में. देयर इज अ विलेज, देयर इज अ विलेज मोटी मोणपरी नियर सताधार विलेज इन सौराष्ट्र. बराबर. Many years ago, a farmer named Matrawala lived in village. In the village, Matrawala's farm was near the river bank. Matrawala would sit in farm under a tree and watch the river water every day. गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते जाएंगे साथ में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में और ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता हो तो हम गुजराती में भी सीखेंगे. સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશે સતાધાર ગામની નજીક મોટી મોણપરી નામનું ગામ આવેલું છે. કેટલાક વર્ષો પહેલા તે ગામમાં માત્રાવાલા નામનો એક ખેડૂત રહેતો હતો. નદી કિનારે ખેતરની વાડી હતી. માત્રાવાળો દરરોજ ઝાડની નીચે બેસીને નદીનું પાણી જોતો હતો. સેકન્ડ. એકદા સહ अपश्यत् सिंह स्वभार्यया सह नद्याः जलपानार्थम् आगच्छत्. नद्याः जले स्थितः मकरः सिंहभार्यायाः वधम् अकरोत्. सिंह तस्य रक्षणाय प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु निष्फल अभवत्. दुःखितसिंह नद्यातटे अतिष्ठत्. चतुर्णादिनानाम् अनन्तरम् यदा मकरः नद्याः तटसमीपम् आगच्छत् तदा सिंह शीघ्रतया आक्रमण अकरोत्. तयोः मध्ये घोरयुद्धम् अभवत्. सिंह मकरस्य वधम् अकरोत्, किन्तु सः स्वयमपि क्षतिग्रस्त भूत्वा तत्वे अपतत्. यहाँ पे जो टफ वर्ड्स है उसका हम थोड़ा पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं इस पैराग्राफ के अंदर. स्वभार्याया सह यानी कि विथ हिज वाइफ, बराबर. और सह एज वेल एज इट्स अ सिमिलर वर्ड यहाँ पे. जल पानार्थम यानी कि टू ड्रिंक वाटर, बराबर. आगच्छत यानी कि केम, ओके. स्थित यानी कि स्टेइंग. मकर यानी कि क्रोकोडाइल. यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो हम देखेंगे. सिंह भार्याया यानी कि द लायोनेस. वधम अकरोत यानी कि किल्ड, बराबर. तस्या रक्षणाय यानी कि फॉर सेविंग हर. निष्फल, निष्फल यानी कि अनसक्सेसफुल. अभवत यानी कि बिकम. दुखित यानी कि सैडनेड. तटे यानी कि ऑन द रिवर ऑफ बैंक, ऑन द बैंक्स. अतिष्ठत, अतिष्ठत यानी कि स्टे, बराबर. चतुर्णा दिनानी यानी कि 4 days.
अनंतरम, अनंतरम यानी कि लेटर. मकर, मकर એટલે કે क्रोकोडाइल. नद्या यानी रिवर. आगच्छत यानी कि आना वहां पे, बराबर. तदा सिंह शीघ्रतया आक्रमण अकरोत्. शीघ्रतया यानी कि क्विकली. आक्रमण यानी कि अटैक. तट समीपम यानी कि नियर द बैंक. तयो मध्ये यानी कि बिटवीन दोस टू, बिटवीन द लायन एंड द क्रोकोडाइल. घोर युद्धम, घोर युद्धम यानी कि उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है. फियर्स बैटल. अभवत यानी कि हैपन. अभवत यानी कि हैपन. स्वयं अपि सेल्फ ऑल्सो. क्षतिग्रस्त यानी कि इंजर्ड. ये इसका पूरा हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे. Once he saw a lion coming with his wife to drink the river water. The crocodile living in the river killed the lioness. The lion tried to save her, but he was unsuccessful. The sad lion stayed on the river bank. 4 days later, when the crocodile came near the river bank, the lion attacked it quickly. There was a fierce battle between the two. The lion killed the crocodile, but he himself was wounded and fell down there itself. तो ये आपको थोड़ा समझ में आ गया. मैं गुजराती में भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. એક દિવસ એણે જોયું સિંહ પોતાની પત્ની સાથે નદી કિનારે પાણી પીવા માટે આવ્યો હતો. નદીના પાણીમાં રહેલો મગર સિંહની પત્નીનો વધ કરે છે. સિંહ તેની રક્ષા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે નિષ્ફળ જાય છે. દુઃખી થયેલો સિંહ નદી કિનારે ઉભો રહે છે. 4 દિવસ પછી તે મગર નદીના કિનારા નજીક આવે છે. ત્યારે સિંહ તરત જ તેના ઉપર આક્રમણ કરે છે. બંને વચ્ચે મહાયુદ્ધ થાય છે. સિંહ મગરનો વધ કરે છે, પરંતુ તે પોતે પણ ઘાયલ થઈને ત્યાં પડી જાય છે. थर्ड पैराग्राफ देखेंगे हम. थर्ड पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ. मात्रावालाः दूरतः एतत् अपश्यत्. सः क्षतिग्रस्तः सिंहस्य सहायतार्थ तत्र आगच्छत्. औषधानि आनीय सः सिंहस्य शुश्रूषाम् अकरोत्. कतिचित् दिनान्तरं सिंह स्वस्थ अभवत् तथा च तस्य मित्रम् अभवत्. तदनन्तरं सः एवं सिंह प्रतिदिनं मात्रावालस्य गृहे तस्य समीपं न्यवसत्. सः मात्रावालेन सह सर्वत्र भ्रमणम् अकरोत्. तस्य गृहक्षेत्रं च अरक्षत्. मनुष्य सिंहो एषा अद्वितीया मैत्री कतिचित् वर्षपर्यन्तं प्रचलित. मात्रावलस्य निधनकाले दुःखित सिंह श्मशानयात्राम् अपि अगच्छत्. श्मशानतः एव सः वनम् अगच्छत्. तदनन्तरं कोऽपि जनः तं सिंहं न अपश्यत्. अद्यापि जनाः एतस्य सत्यप्रसंगस्य विस्मरणं कर्तुं न शक्नोमि. यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में हम हार्ड वर्ड देखेंगे. मात्रा वाला यानी कि मात्रा वाला. दूरत यानी कि फ्रॉम फार अवे. एतत् सर्वम. एतत् यानी कि ऑल दिस. क्षतिग्रस्त. क्षतिग्रस्त यानी कि ऑफ द इंजर्ड लायन. सहायतार्थम टू हेल्प. आगच्छत यानी कि केम. औषधानि यानी कि मेडिसिन. आनीय यानी कि बाय ब्रिंगिंग. शुश्रूषाम. शुश्रूषाम यानी कि ट्रीटमेंट सर्विस. ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है. कतिपय दिनांतरम. कतिचित. कतिचित यानी कि आफ्टर अ फ्यू डेज. स्वस्थ. स्वस्थ यानी कि ऑल राइट. तदंतरम. तदंतरम यानी कि आफ्टर दैट. दिस इज एन. आफ्टर दैट दिस इज एन इनक्लाइमेबल. बराबर. चलो. मात्रा वाला यानी कि मात्रा वाला हाउस. तस्य समीपे यानी कि नियर. न्यवसत यानी कि स्टार्टेड लिविंग. बराबर. चलो. मात्रा वाला स यानी कि विथ मात्रा वाला.
सर्वत्र, सर्वत्र यानी कि एवरीवेयर। अरक्षत, अरक्षत का मतलब यहाँ पे है प्रोटेक्टेड। अद्वितीया मैत्री, अद्वितीया मैत्री यानी कि यूनिक फ्रेंडशिप। कति वर्ष पूर्व यानी कि फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। प्रचलित, प्रचलित यानी कि वेंट टू, कंटिन्यू। इम्परफेक्ट पास्ट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ प्रचलित, वेंट ऑन। निधन काले यानी कि एट द टाइम ऑफ डेथ। मात्रावालस यानी कि मात्रावाला। स्मशान यात्राम, स्मशान यात्राम यानी कि फ्यूनरल प्रोसेशन, बराबर। अपि अगच्छत। स्मशानतः यानी कि फ्रॉम द सेरेमनी। वनम अगच्छत वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वनम अगच्छत वेंट इनटू द फॉरेस्ट। कोडपि जनः यानी कि नो पर्सन। तम सिंहम, तम सिंहम यानी कि दैट लायन। न अपश्यत नॉट सीन। अद्यापि जनः, अद्यः प्लस अपि यानी कि टुडे ऑल्सो, बराबर। एतत् सत्य प्रसंगस्य ऑफ दिस ट्रू स्टोरी। विस्मरणम टू फॉरगेट। कर्तुम न शक्नोमि आर नॉट एबल। इसका हम पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखेंगे। मात्रावाला was looking at all these from far away. He came there, help to the wounded lion. He brought medicine and treated the lion. After a few days, the lion became all right and became his friend due to the treatment. That lion started living near Matrawala in this house. He would go everywhere with Matrawala home and field. The unique friendship between man and lion went on for quite a few years. At the time of Matrawala death, the suddenly lion joined the funeral procession also. He went away into the forest from the cemetery itself. Thereafter, no man saw that lion again. Even today people are not able to forget this true story. तो ये थर्ड पैराग्राफ का हम गुजराती में ट्रांसलेशन देखेंगे। માત્રાવાળા દૂરથી આ જુએ છે, તે ઘવાયેલા સિંહની મદદ માટે ત્યાં જાય છે. ઔષધો લાવીને તે સિંહની સારવાર કરે છે. કેટલાય દિવસો પછી સિંહ સાજો થાય છે અને ત્યારબાદ સિંહ તેનો મિત્ર બની જાય છે. ત્યારબાદ સિંહ દરરોજ માત્રાવાળાના ઘરની નજીક રહે છે. તે માત્રાવાળાની સાથે દરેક જગ્યાએ ભ્રમણ કરે છે. તેના ઘરની અને ખેતરની રક્ષા કરે છે. મનુષ્ય અને સિંહની આ અદ્વિતીય મિત્રતા કેટલાય વર્ષો સુધી ચાલી. માત્રાવાળાના મૃત્યુ સમયે દુઃખી થયેલો સિંહ સ્મશાનમાં પણ જાય છે અને ત્યારબાદ સ્મશાનથી તે જંગલમાં જતો રહે છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ માણસે સિંહને ત્યાં જોયો નથી. फोर्थ पैराग्राफ का गुजराती में ट्रांसलेशन। આજે પણ લોકો આ સત્ય ઘટનાને ભૂલી શક્યા નથી.